Students, next is steps towards Islamization since 1977. तो इसके अंदर पहला पॉइंट है जुडिशरी एंड लीगल सिस्टम. सो ग्रेजुअल जो प्रोसेस था इस्लामाइजेशन का वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चला है. जुडिशल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना 12 रबीउल अव्वल 1933 AH को, और उसके अंदर फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो के इंक्लूड किए गए. Number 1, students, as you can see on your screens, Islamic penalties were imposed on the crimes like drinking, stealing, adultery and false allegation of adultery. Number 2, a federal Sharia court was established at federal level. Its status was equal to that of high courts. Ulama and the experts of Islamic jurisprudence were appointed as judge at this court. Number 3, un-Islamic practices in the court procedures were abolished. Number 4, feeling that the successful implementation of Islamic law cannot be made possible without the help of trained experts, especially for this purpose, a Sharia faculty and an Islamic university was established in Islamabad. Classes were started in the institutions of religious learning. Number 5, the objective resolution was made a justiciable part of the constitution. So students, आपको बहुत अच्छी तरह इन पॉइंट से ये समझ आ गया होगा कि तमाम तर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इस्लाम के अकॉर्डिंग हैं उनको मेक श्योर कराया गया. किसी भी किस्म की प्रैक्टिस जो कि अनलॉफुल है या अन इस्लामिक है उसको बिल्कुल भी उसको अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन आपके करार दे दिया गया. आपकी जो जुडिशरी है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, और फेडरल शरिया कोर्ट्स बनाए गए एट फेडरल लेवल और हाई कोर्ट्स भी बनाए गए फॉर दिस पर्पस.